Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video for you all about Nifty, about Bank Nifty, what's happening with Midcap और क्या लग रहा है यहाँ से मार्केट. Event is ongoing. Nifty gap से हो रहा है या तो gap down या gap up. So you cannot control the gaps. You can still predict it, but you cannot do anything about the gaps because gap is created because of an overnight event. तो अगर ओवरनाइट वॉर सिचुएशन वर्सन हो रही है तो गैप डाउन हो रहा है. ओवरनाइट वॉर सिचुएशन लग रहा है बेटर होगी, सीज फायर होगा, जो भी अनाउंसमेंट है तो गैप अप हो रहा है. सो दैट इज नॉट इन द कंट्रोल, बट व्हाट इज इन कंट्रोल इज once there is a gap, the markets are respecting the levels and it's working fantastic in a very systematic fashion. मैं charts दिखाऊंगा आपको. You don't have to agree or disagree with me. आप charts देखिए. And बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप फैशन से आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स हैपनिंग विथ मिड कैप, जहां पर ज्यादा पेन होना चाहिए. व्हाट्स हैपनिंग विथ स्मॉल कैप, what is the ratio of mid cap small cap suggesting, what's price to earning ratio, fundamental parameter p ratio क्या बता रहा है. ये सारी चीजों को देखते हैं इस वीडियो के अंदर. if you are liking these short videos then do not forget to subscribe the channel, like करो, शेयर करो, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब आई नीड कमेंट्स डाउन देयर. जितने कमेंट्स आएंगे ऐसे शॉर्ट वीडियोस मैं और आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा. तो बहुत ही क्विकली लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन. इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन. Okay, I'm just sharing across my screen here, every one of you. यहाँ पर are you able to see? So overall, you can see this is the fall which I have marked along with my new wave counts. यहाँ पर इस चार्ट के बदले पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ विच इज गोइंग टू बी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स. तो क्या करेंगे, हम एक रेशियो चार्ट देखेंगे सी एन एक्स मिड कैप एंड सी एन एक्स मिड कैप डिवाइड बाय निफ्टी करके देखेंगे. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अक्रॉस ऑन माई ट्विटर. एंड फिर हम स्मॉल कैप पे भी देखेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू चेक दिस रेशियो एंड वीकली पे देखेंगे. Overall, if you look at the weekly chart of this ratio, it shows a very classic breakout which has happened even after all of those consolidation and negative pessimism that has happened. Yes, index mid cap index is outperforming. Outperforming का मतलब है mid cap गिर नहीं रहा, ऐसा नहीं है. Outperformance मतलब होता है mid cap is relatively not falling that much as compared to large cap nifty index. So mid cap में इतना ज्यादा selling pressure नहीं है जो large cap में दिख रहा है. That's one information. It is breaking out and consolidating. A weekly chart है near the higher end of the range, which is a positive sign in the broader market. So this is Nifty mid cap to Nifty ratio. दूसरा चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है निफ्टी स्मॉल कैप. ये मिड कैप का हमने देखा. what we will do is we'll look at small cap also and then we will go on to look at some options, data, volatility, skew. ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा. So we are now going to look at what is happening with small cap index. ना बहुत इंटरेस्टिंग है ये लाइन. अगर आपने मेरा एक और वीडियो पहले देखा होगा, दिस इज द लाइन विच आई प्लॉटेड अर्लियर. द स्मॉल कैप इंडेक्स, दिस इज अगेन अ वीकली चार्ट, इज शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस सिंस जनवरी ऑनवर्ड्स. मतलब निफ्टी ज्यादा गिरा है कंपेयर टू स्मॉल कैप. दैट इज अ साइन, दैट्स अ पॉजिटिव साइन. ओके, यहां पर भी अगर आप देखोगे 1 अप्रैल को जब इतना ज्यादा मूवमेंट आया था सेलिंग साइड पे, मिड कैप में ज्यादा नहीं था. पोर्टफोलियो भले ही आपका शायद नीचे जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दो स्पेसिफिक स्टॉक्स, बट ओवरऑल सेलिंग अभी भी मिड कैप पे उतनी नहीं है जितनी लार्ज कैप में. दिस इज द चार्ट एंड दैट चार्ट नेवर लाइज. इट इज गिविंग यू दैट प्रूफ. आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे बाय करना है, आई एम सेइंग दिस शोज रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द ब्रॉडर मार्केट एज ऑफ नाउ. ये लाइन अगर ब्रेक होती है 0.65 तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो अभी प्रोटेक्टेड है. नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू गो ऑन द चार्ट हियर which is going to be about showing you a very very detailed open interest. साथ में volatility skew क्या लग रहा है, क्यों देख रहे. यहाँ ये स्क्रीन आप देख पा रहे पूरा पूरा. on this screen you can see it's a very classic platform that I'm exploring right now. on the left hand side we can see volatility skew. now ये volatility skew होता क्या है, let me just explain it to you in a very very simple way. once I'm seeing this data, यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज एटीएम, दिस इज दी, लेट मी जस्ट मार्क इट अक्रॉस जस्ट अ सेकेंड. हाँ, दिस इज एटीएम. एटीएम मतलब ये लेवल पे मार्केट है, एटीएम स्ट्राइक है, एट द मनी ऑप्शन. नीचे इसके पुट का स्ट्राइक्स है, दीज आर पुट ऑप्शंस.
और इसके ऊपर कॉल है, ये ओटीएम कॉल्स है। नाउ हाउ इज दीज आईवी, इससे पता चलता है हमारा आईवी क्या है। सो फार अवे ओटीएम ऑप्शन का आईवी अगर हम देखेंगे तो अभी भी वी आर अराउंड 23.5 के आसपास, दिस इज 23,700 का स्ट्राइक प्राइस, एंड फार अवे 21,700 का स्ट्राइक प्राइस, दीज आर 20 स्ट्राइक्स विच वी आर लुकिंग एट 7th अप्रैल एक्सपायरी, वो चेंज कर सकते हो। इफ यू लुक एट दिस स्ट्राइक प्राइस वी कैन क्लियरली सी 21,700, the IV is somewhere around near to 33, मतलब पुट में अभी भी ह्यूज IV है, which means put option is very expensive compared to call option. Equilibrium कब होता है? Because of the event. If there wouldn't have been event, you will see put is always a little higher IV compared to call. लेकिन कैसा होना चाहिए था चार्ट? चार्ट होना चाहिए था इस तरीके से। सो समवेयर अराउंड हियर, उतना भी नहीं होना चाहिए था, मे बी समवेयर अराउंड हियर, इतना। सो दिस इज हाउ द चार्ट शुड हैव बीन। तो इतना ज्यादा जो आईवी बढ़ा हुआ है, दैट इज द रिस्क because of which option is demanding that much. And you can see Nifty is already uh, moving by 500 points every single day. 500 पॉइंट तो नॉर्मल हो गए। Now this the bottom chart. This is my trading screen which I am looking at it. The bottom one is कल का अगर आपको चार्ट याद होगा, मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था यार, 22,200 के ऊपर इतना जबरदस्त पुट राइटिंग क्यों हो रहा है, एंड निफ्टी वॉज एट 22,280 and 22,200 was showing very heavy put writing which was around this area. So put is this color and call options are orange color, so this is yellowish color. So this is call option and this is bluish which is put option. Now 22,200 showed a huge put build up yesterday, and we clearly saw how market reversed sharply on the upside. ना यहां पर 23,000 का कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा हुआ है, मतलब उसे क्रॉस करना मुश्किल होगा। एटीएम में इतना ज्यादा नहीं है, तो विच मीन्स ऑप्शंस आर नॉट शोइंग एनी स्पेसिफिक कमिटमेंट फ्रॉम बिग प्लेयर्स, विच मीन्स दे आर नॉट कमिटेड राइट नाउ। 22,500 वी स्टिल हैव सम पुट ऑप्शन, बट उतना ज्यादा नहीं है। सो कल देखना क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू सी हाउ द मार्केट ओपन्स, गैप अप या गैप डाउन होगा मंडे को, we are going to look at the post that. After that I'm going to see the options data, bhai, what is the option data suggesting, where is the build up happening, but its data can change very fast, huh? So price action पे ध्यान रखना है। Once I know this data is showing a very sharp price at 22,700, I know मतलब उसके ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं दिख रहा है अगर 22,500 शार्प राइज हो रहा है पुट साइड पे, मतलब सस्टेन करने का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है। दैट्स वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व। कॉल का आईवी स्टार्ट स्पाइकिंग अप, अगर यहां से स्पाइक अप हो रहा है तो मतलब कॉल सेलर्स गड़बड़ में है। मतलब क्या हुआ, आईवी कब बढ़ रहा है, जब कॉल प्राइसेस बढ़ रहा है, कॉल प्राइस बढ़ रहा है विच मीन्स कॉल सेलर्स आर नॉट एक्टिव, एंड दैट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल ऑन द अपसाइड इफ दैट हैपेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस एक्शन, केएसटी इंडिकेटर इज शोइंग मी अ वेरी क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस एज ऑफ नाउ, एंड प्राइस एक्शन अबाउट 22,930। सो कौन सा प्राइस एक्शन लेवल है मेरे लिए, यहां पे 22,930 लेवल है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ माय बिग प्लेयर्स एक्टिविटी बाय लुकिंग एट दिस चार्ट। आई एम सीइंग व्हाट्स हैपनिंग विथ माय ऑप्शंस आईवी डेटा, एंड देन आई एम लुकिंग एट दिस थिंग्स। और यहां पर मेरा वेव पैटर्न क्या है, सो दिस वाज पॉसिबली द सी वेव, नहीं सी वेव यहां कंप्लीट किया था हमने, दिस वाज एक्स वेव, दिस इज ए बी सी डी ई एफ, and this looks to have been completed G wave, looks to have, abhi too soon, let's see, G can have just one dip and then reversal up. So we have series of divergence which means overall downtrend matured lag raha hai, lekin bhav bhagwan se price action is god, we still do not have a reversal as per 3 candlestick rule, we are going to look at it. So ये डेटा बता रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब मोमेंटम तो कम हुआ है नीचे, मतलब गाड़ी अगर रिवर्स जा रही है, रिवर्स की स्पीड कम हुई, विच वॉज 60 किलोमीटर पर आवर, नाउ एटलीस्ट इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, दैट्स व्हाट द पॉजिटिव डाइवर्जेंस इज शोइंग मी। ओवाई डेटा बता रहा है नहीं अभी भी गड़बड़ है, 23,000 पे कॉल सेलर्स आर एक्टिव, आई नीड टू सी देम गोइंग डाउन इफ आई हैव टू बी बुलिश।
I need to see call IV increasing. So these combinations is going to give me a very clear confirmation something is changing. This is a classic screen आप जो देख पा रहे हैं, which gives everything. यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर कोई न्यूज आ रही है स्टॉक स्पेसिफिक, आई कैन सी द न्यूज हियर, एवरीथिंग, एंड कौन सा स्टॉक्स ट्रेंडिंग है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. यहाँ पर यू कैन look at the indicators जो भी है, so you can save this layout also, so like I have saved. So I thought I'll just show it across to you how it's working. And जाते जाते एक और very important chart that I want to show you is the price to earning data. Price to earning ratio कर क्या रहा है? I'm going to switch my screen to another platform. So I keep using these multi platforms and it is wonderful. If I look at price to earning data, this is since maximum 2007 से दिख रहा है. This is 2008 का crash when PE ratio collapsed on the downside. This is 2020 का crash COVID वाला which we saw. ये तो sharp after COVID के बाद you have to ignore this because normalization था. Then again it corrected sharply. So we are now at these levels. ये लेवल पे आ चुके हैं विच इज बिलो द मीडियन. मीडियन इज 21.9, मीडियन थोड़ा सा नीचे ले लीजिए. सो वी आर बिलो द मीडियन, सो वी आर नॉट ओवर बॉट इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस. यस पॉसिबल है अर्निंग्स डिटोरेट होगा तो पी रेशियो स्टिल एलिवेटेड हो जाए, बट जो कि होगा इस क्वार्टर में, ये एक या दो क्वार्टर में होगा बिकॉज ऑफ द इवेंट. बट एनीवेज वी आर स्टिल देयर. इसका मतलब ये नहीं कि पी रेशियो कैन नॉट गो टू 15, इट कैन स्टिल गो, बट इट मीन्स ठीक है, मतलब वी आर नॉट वेरी एलिवेटेड, वी आर बिलो द मीडियन, वी आर इन अ एक्सेप्टेबल रेंज. दैट्स व्हाट पी रेशियो इज शोइंग मी राइट नाउ. I'm going to see very closely how the earnings are changing and how the P ratio is changing. This is how you combine all of those things together to make a view and then take a trade. तो ओवरऑल करना क्या है अभी यहां से? ओवरऑल आई गो बैक टू माई स्क्रीन अगेन, द अर्लियर वन. यहां पर अगर ओवरऑल मैं देखूं मार्केट, आई एम नाउ गोइंग टू जूम इन द चार्ट. ओवरऑल नीचे डिप मिलता है. इफ आई गेट अ पॉजिटिव रिवर्सल अगेन फ्रॉम 22 440 480 लेवल्स, विल गेट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड इवेंचुअली अराउंड 22 920 930 तक. इफ यू ब्रेक 22 930, शॉर्ट कवरिंग शुरू होगा. दैट इज द व्यू. ओवरऑल सेल कब करना है? वेट करना पड़ेगा. वी नीड टू सी some kind of a downfall, pullback and low broken, then sell. क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं, गैप से ही होगा, या तो नीचे या ऊपर. So we'll have to wait and watch how the gap happens because weekend है, we'll have to see that. So this is how you have to combine things together and you have to look at the charts. And if these videos जो आज मैंने आपको बताया, इंटरमार्केट एनालिसिस, सीएनएक्स मिड कैप कंपैरिजन, रिलेटिव रेशियो, वॉलेटिलिटी, स्क्यू, मतलब सोचिए ना इतना डिफरेंट इनसाइट है, कभी सोचा था आपने मिल सकता है. सो दीज आर शॉर्ट वीडियोज दैट आई एम मेकिंग फॉर यू ऑल. ये मुझे तो पता ही है, मेरे रिसर्च में तो मैं करता ही हूं ट्रेड लेने के लिए, एंड आई एम अ ट्रेडर. दिस इज व्हाट आई सी एंड दिस इज व्हाट आई टीच. सो इफ यू थिंक दिस इज समथिंग दैट यू लाइक, what I need is your comment, what I need is your retweet, and I need to know you're subscribing the channel. अगर ये होगा तो मैं वीडियोस फ्रीक्वेंटली बनाऊंगा, अगर नहीं होगा तो मुझे लग रहा है फिर आपको नहीं जरूरत है. सो आई वॉन्ट टू टीच यू, क्या पसंद आ रहा है आपको बताना होगा. और जाते जाते एक और चीज दोस्तों, बहुत क्लियरली सैटरडे को मॉर्निंग में 11 बजे हमारी मास्टर क्लास है. यू हैव टू ज्वाइन 10 मिनट्स प्रायर, एक्सक्लूसिवली जूम पे होने वाली है. आपको 10 मिनट पहले जुड़ना होगा इस मास्टर क्लास के अंदर, विच इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग eye-opening masterclass where I'll teach you price action. I'll look at options data in much detail, and that is what I'm going to share across. So अगर आप जुड़ रहे मास्टर क्लास में, and if you think this master class can change the way you see market, भूलना नहीं, ये फ्री मास्टर क्लास है. सैटरडे 11 बजे, सुबह 10 मिनट पहले जुड़ना. आप 2 घंटे आपको निकालने होंगे. आई एम गोइंग टू चेंज योर वे ऑफ सीइंग द मार्केट्स. वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. क्लियर है ना? चलिए जाते जाते वेरी क्विकली, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी. अगर आप रजिस्टर कर रहे, जूम पे है, फ्री है. आई ओपनिंग मास्टर क्लास इसे मैं कहता हूं. क्विक डिस्क्लेमर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज रिस्की. Registration granted is no way guarantee of performance. Keep that in mind. A very quick disclosure, guys. And it's wonderful, such video, and I am sure you are loving it across.
कमेंट देखने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर।